नमस्कार दोस्तों। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मैं एक बार पुनः हाजिर हूं आप सबके सामने संडे संवाद के 5वें एपिसोड के साथ, जहां बातें होंगी कुछ हमारी और कुछ आपकी। पिछले 4 एपिसोड के साथ आप सभी ने जो अपनापन और उत्साह दिखाया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके सवालों पर बात करूं, कुछ हमारी भी हो जाए। बेशक बात हमारी है, लेकिन सीधे आपसे और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया कोरोना के चक्रव्यूह से घिरी हुई है। भारत भी बड़ी मजबूती से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और भारत की इस लड़ाई को खुद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। दोस्तों, सरकार कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यह मत भूलिए कि यह लड़ाई जनता के सहयोग के बिना नहीं जीती जा सकती है। तभी तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत का आह्वान किया है। यह जन आंदोलन जरूरी था, क्योंकि त्योहारों का मौसम करीब है। त्योहारों में लोगों की थोड़ी सी लापरवाही स्थिति को विकराल कर सकती है। हम सभी को प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। मैं आज संडे संवाद के इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोरोना के खिलाफ उनकी इस पहल के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। संडे संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप सब कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर कोरोना को हराने में अपना योगदान दें और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। इस जन आंदोलन को अपने घर के एक एक सदस्य से लेकर अपने मोहल्ले और अपने कार्यस्थल तक लेकर जाएं। जिस दिन हम ऐसा करने की ठान लेंगे, कोरोना की हार निश्चित हो जाएगी। और हाँ, इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। मास्क ठीक से पहनिए, हाथ साबुन और पानी से साफ करते रहिए और 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। बस यही बातें तो आपको सब तक पहुंचानी हैं। तो ये थी कुछ बातें हमारी, और अब बात करेंगे आपकी। And now, moving on to the questions I have received from some of you. The very first question in this Sunday Samvad is from Mr. S.L. Mehra on immunity boosters. He is a retired government officer from Delhi, and he has asked, when the efficacy of Ayurvedic immunity boosters is not fully established for COVID-19 treatment, then why are these being advertised with various claims? Mehra ji, Ayurveda has a holistic approach towards disease management, wherein salutogenesis is a major approach towards treatment of a disease condition and its prevention. In this aspect, for prophylactic care against COVID-19, Ayurveda interventions are prescribed after in-depth study of literature, scientific studies including in silico studies
experimental studies and clinical studies. The ministry has conceptualized and promoted public advisories about the use of time-tested and evidence-based natural Ayush remedies for health promotion and immunity modulation of the people during the COVID-19 pandemic. The interventions advocated for COVID-19 like Guduchi, Ashwagandha, Guduchi and Pipali combination and Ayush 64 have a substantial number of studies which prove their immunomodulatory, antiviral, antipyretic and anti-inflammatory properties. These interventions have also shown a good binding affinity with COVID-19 virus in silico studies. Furthermore, on the recommendations of the interdisciplinary task force set up by the government, scientific studies have also been initiated with the aforesaid remedies to assess their impact in the prophylaxis, secondary prevention, and management of COVID-19 afflicted cases. The second question in this episode is from Jitendra Kumar. He has asked, the Ministry of Health and Family Welfare's COVID-19 post-recovery document recommends consuming Chyawanprash daily. However, Chyawanprash from companies like Dabur and Patanjali consists of over 65% sugar per serving. Sir, how is this product even remotely healthy for anyone? Jitendra ji, Chyawanprash is an age-old Ayurvedic multi-herbal formulation that has been scientifically proven to be antioxidant, immunity enhancer, immunomodulator, anti-degenerative, and overall health promotive to enhance the quality of life and prevent infectious diseases. Chyawanprash is the foremost and traditionally used Ayurvedic tonic for preventive and promotive health care, particularly for strengthening respiratory immunity, for mitigation against repeated infections, and for geriatric health problems. The information available through clinical studies from databases evidenced that individuals who consume Chyawanprash regularly for a definite period of time show improvement in overall health status and immunity. Studies have also shown its potential as neuroprotective, cytoprotective, and with antioxidant properties. Regarding sugar, it is one of the essential ingredients of the classical type of Chyawanprash to be used in prescribed proportions in making the product, which is in compliance with the provisions of the Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945. However, sugar-free versions of Chyawanprash are currently being manufactured and are available in the market for those who are either not willing to use sugars or are medically advised to avoid sugar-rich foods and drinks. Sunita ji from Faridabad has asked, माननीय मंत्री जी, त्योहारों का मौसम करीब है। आपके मंत्रालय ने त्योहारों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी कर अपना काम पूरा समझ लिया है। क्या आपको लगता है कि लोग इन दिशा निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन करेंगे? आपका कोई सुझाव? सुनीता जी, आपकी चिंता जायज़ है। देखिए, त्योहारों के मौसम में कोरोना के संक्रमण का खतरा निश्चित तौर पर अधिक है और इसे लेकर हम सब चिंतित हैं। आज संडे संवाद के आरंभ में भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। आपने सुना होगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए जन आंदोलन की शुरुआत की है। अगर आप और हम सब इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी दें तो निश्चित तौर पर त्योहारों को लेकर
हमने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो खुद ब खुद जनता तक पहुंच जाएंगे। इस जन आंदोलन में प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर सदैव मास्क पहनने और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखने को भी लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों को यह समझा पाने में कामयाब हुए तो समझ लीजिए ये पर्व त्योहार भी खुशियों के साथ निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर हमने अपने पर्व त्योहारों के दौरान कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने में कोताही बरती तो कोरोना एक बार फिर विकराल रूप ले सकता है और हम सब के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसे आप मेरी चेतावनी समझें या सलाह, लेकिन सच्चाई यही है। और हाँ सुनीता जी, आपके इस प्रश्न के माध्यम से मैं यहाँ एक और गुजारिश लोगों से करना चाहूँगा कि आने वाले समय में पर्व त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आने वाली है। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, छठ, भाई दूज, क्रिसमस जैसे कई पर्व हैं। अगर हम सब अपने इन त्योहारों पर मेक इन इंडिया वस्तुओं की खरीदारी पर जोर दे सकें तो निश्चित रूप से हम अपने प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। कोशिश करें पाश्चात्य परंपराओं से हटकर भारतीय परंपरा का अनुसरण करें। और हाँ, किसी भी धर्म में कोई भी धर्माचार्य यह नहीं कहते कि लोगों के प्राणों को खतरे में डालकर त्योहार मनाया जाना चाहिए। कभी कोई भी भगवान यह नहीं कहते कि उनकी पूजा के लिए आपको बड़े बड़े पूजा पंडालों में जाने की ज़रूरत है। अरे आपको पता हो कि बाहर आग लगी है और कैसे आप लोगों को धर्म और त्योहारों के नाम पर तब झोंक सकते हैं उसमें। ऐसे त्योहार का भला क्या मतलब है। आप सच्चे मन से कहीं भी अपने भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बल्कि सुनीता जी सच कहूं तो मैं तो यही चाहूंगा कि लोग सभी त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं। पहले भी यही होता था, जब सभी पर्व त्योहार छोटे छोटे समूहों में मनाए जाते थे। बड़े पंडालों और मेलों में जाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। फिर भी अगर आप अपनी धार्मिक भावनाओं एवं मान्यताओं के अनुरूप किसी पूजा पंडाल में जाते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है कि 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहनें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाते यह मेरा पहला धर्म है, लोगों के प्राणों की रक्षा करना। The reality today is that there are some cities which are worst hit by COVID-19, like Kozhikode, Mumbai, Thane, Pune. The economy of these 2 states, Maharashtra and Kerala, has taken a nosedive. In some cities, there is a devastating effect of COVID resurgence. Keeping in view all these facts, we need to reboot our strategy for economic revival. Please note that we need to be very cautious and very discerning
festivals will come and go. What does our dharma say? I ask you. I will speak for myself. As an individual, as well as the health minister of the country, my dharma is to protect my people, to save lives and not destroy. No religion or God says that you have to celebrate in an ostentatious way, that you have to visit pandals and temples and mosques to pray. These are extraordinary circumstances and they must draw extraordinary responses. In Kurukshetra, on the cusp of Mahabharata, Lord Krishna tells Arjun, follow your dharma. And at this juncture, your dharma says, fight against COVID with whatever it takes. The Bhagavad Gita condones war for the warrior class. It is the dharma, the moral duty of soldiers to fight for a good cause. A true Vaishnav is the one who recognizes Lord Krishna within. So, there is no need to congregate in large numbers to prove your faith or your religion. If we do this, we may be heading for big trouble. Lord Krishna says, concentrate on your goal, my goal, and your goal. Our goal is to finish this virus and save humanity. This is our religion, the religion of the whole world. Moving on to the next question now, by Sanjeev Kapoor ji, who has said, Sir, don't you think COVID-19 patients should have an option for a free telemedicine facility so that the patient can get proper advice and care during home quarantine or isolation period? I would like to inform you, Sanjeev ji, that the Ministry of Health and Family Welfare has a free online OPD service called eSanjeevani, which aims to provide healthcare services by empaneled doctors to the patients wherever they may be. Currently, eSanjeevani has over 12,000 practitioners of various state government health departments, and their services have been sought by people from 510 districts across 26 states in the country. While the first 1 lakh consultations on the platform took around 3 months, the last 1 lakh consultations have come up in well under 3 weeks. I am sure this increase in acceptance of telemedicine service in India will not only enable us to provide the right care to the patients during the COVID-19 pandemic, but also enable us to contain the transmission of the novel coronavirus in the country. अगला प्रश्न है रितु शर्मा जी का, जो पीतमपुरा दिल्ली से हैं। वो पूछती हैं, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद तक पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। क्या ऐसे में आपको अपने संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक की चिंता है? क्या आपको हम सबकी याद आती है? देखिए, मेरे प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। जहां तक WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनकर भारत का मान बढ़ाने का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि मैं तो मात्र एक माध्यम हूं। मान तो आप सबका बड़ा है, पूरे भारत का बड़ा है। रही बात देश और जनसेवा के क्षेत्र में मेरे जुड़े रहने की, तो इसका जवाब देते हुए मुझे आज मेरी पूजनीय माँ बहुत याद आ रही हैं।
बचपन से ही माँ कहा करती थी कि सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से आगे बढ़ो। ना बढ़ सको तो भी ईमानदारी मत छोड़ना। माँ के अनमोल वचन थे जिनके सहारे जिंदगी की राह को मैंने आगे बढ़ाया। संघर्ष पिता ने सिखाया और संस्कार माँ ने दिए। ये माँ का साहसी व्यक्तित्व था कि साधारण परिवार होने के बावजूद भी माँ ने मुझे और मेरे बहन भाई को असाधारण जिंदगी दी। माँ कहती थी, इंसान को जो जिंदगी भगवान ने दी है वह उन्हीं की अमानत है, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में दूसरे की जितनी भी मदद कर सको वह कम है। माँ की यही सीख आज मुझे इस मुकाम पर ले आई है कि मैं समाज के लिए कुछ करने में सक्षम हूँ। आज उन्हीं के सिखाए मार्ग पर चलकर समाज सेवा करना संभव हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मैं आप सबके बीच इसी रूप में नजर आऊँगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग हर समय मेरे दिल की गहराई में वास करते हैं। Moving on to next question by a COVID warrior, Dr. Akash Ghosh, who has asked, with almost 90% recovery and low COVID admissions, the majority of beds lie vacant. In fact, 61% of the COVID-19 beds in Delhi are currently vacant. Maybe it's time to open up these beds for non-COVID patients. Akash ji, I would like to assure you that the government is well aware of the need to maintain the availability of non-COVID essential health services during the COVID-19 pandemic. With this goal in mind and for the appropriate management of COVID-19 cases, a dedicated 3-tier arrangement of health facilities has been implemented across the country. This tiered structure was also created to prevent cross-infection to non-COVID patients. At the base of the pyramid, we have COVID care centers with isolation beds for mild or pre-symptomatic cases. Then we have dedicated COVID health centers with oxygen-supported isolation beds for moderate cases. And lastly, we have dedicated COVID hospitals with ICU beds for severe cases. With improving recovery rate as of now, it is expected that many beds earmarked for COVID-19 may be unutilized. However, we need to remain vigilant and prepared for any surge in cases that may occur. However, we have continuously flagged the issue of not compromising with care of non-COVID patients with all the state governments throughout the last 9 months. मेरी कंस्टिट्यूएंसी से मोनिका सैनी जी एक सवाल पूछ रही हैं। सर, आपके चुनाव क्षेत्र में कई ओपन जिम हैं, परंतु लॉकडाउन के दौरान सब बर्बाद हो गए। कोई भी जिम अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। अब क्या करेंगे आप इसके बारे में? मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे और अपने संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि कोरोना के कारण आप लोगों के साथ मेरा नियमित व्यक्तिगत संपर्क टूट गया है। हालांकि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बीजेपी कार्यकर्ता और आरडब्ल्यूए से संपर्क बनाए रखने का थोड़ा प्रयास लगातार किया है। कोरोना महामारी और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी के बीच मेरी व्यस्तता का अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं। लॉकडाउन के कारण बहुत से काम रुक गए थे। जीवन जैसे ठहर गया था। मुझे पता है कि इस दौरान आप सभी ने कई मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब अनलॉक 5 शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जीवन थोड़ा और सामान्य होगा।
अगर जिम टूटे पड़े हैं तो चिंता ना करें। मुझे पता है इस तरह की और भी कई समस्याएं क्षेत्र में हैं और मैं सभी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर हूँ। संडे संवाद के इस मंच से मैं अपने संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक के सभी सम्मानित नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आप सब के लिए बेशक व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध ना हो पाऊँ, लेकिन आप मेरे फ़ोन नंबर 9810115311 पर सीधे संपर्क कर क्षेत्र की समस्याओं से मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं अपना नंबर दोबारा दोहरा देता हूँ, आप सब नोट कर लें। मेरा नंबर है 9810115311। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र हो। इसके लिए मैं क्षेत्र के जागरूक नागरिकों से यह भी आग्रह करूंगा कि वे जन समस्याओं के बारे में मुझे लगातार सूचित करते रहें। Now moving on to a question from Mr. Mahesh Babu from Hyderabad, who asks, I think our government is waiting for herd immunity. First, the government announced that the vaccine would come by August 15. Then the deadline was pushed to the end of 2020. And now you are saying that the vaccine will be launched in early 2021. Are these announcements made just to appease people? Mahesh ji, I can understand the anxiety and frustration of people on this issue. Please understand that vaccine development is a resource intensive and time consuming process. A vaccine candidate has to undergo a preclinical trial on animals, followed by multiple phases of the clinical trials. Every phase has to be analyzed scientifically to ensure that the vaccine development is on the right track. This process ensures that the vaccine is not only effective but also safe. I would also like to clarify that till date, no official public announcement has been made regarding the date by which vaccine will be available. While full and wholehearted efforts are ongoing at the government, industry, and the academia level to make available a safe and effective vaccine for people of India. Moving on to the question from Bhishma, who has asked, Sir, Serum Institute has tied up with Bill Gates Foundation. With such low mortality rate among COVID-19 patients, is COVID vaccine really required? Or is the government just pushing Bill Gates' agenda by forcing people to vaccinate for COVID? Bhishma ji, I can tell you from personal experience that among pharmaceutical interventions, an effective vaccine is the most important tool to prevent and control the spread of the disease, which is why there have been multiple public and private partnerships, not just in India, but globally at various levels to facilitate the development of an effective and safe COVID-19 vaccine. Two such examples are Bharat Biotech International Limited and Cadila Private, pharmaceutical manufacturers in India, who are collaborating with ICMR for a COVID-19 vaccine. I am now taking up a question from Mr. Brian Johnston, who has asked, how can you plan for a vaccine that has not been approved anywhere in the world? Are these preparations just to provide false hopes to the people? Mr. Brian, I would like to inform you that it is very important to plan the rollout of COVID-19 vaccine while they are being developed due to several reasons. To begin with, it is anticipated that the supplies of COVID-19 vaccines would be available in limited quantities. Therefore, in a huge country like India, it is critical to prioritize vaccine delivery
based on various factors such as risk of exposure, comorbidity among various population groups, the mortality rate among COVID cases, and several other reasons. Rather than randomly vaccinating everyone, if these nuances are not addressed appropriately, then the people who actually need the vaccine may eventually not get it. Besides, India is looking at the availability of several different types of vaccines, of which some may be suitable for a particular age group, while the others may not be. Cold chain and other logistics need to be planned appropriately to ensure no glitches occur in vaccine delivery even to the last mile. Community sensitization activities to understand reasons for vaccine hesitancy and address them appropriately also need to be looked into. अगला प्रश्न है रोशन सिंह जी का, जो पूछते हैं, सर हम बड़ी बेसब्री से कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या यह उम्मीद करें कि आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन पाने में प्रायोरिटी मिलेगी? देखिए, मैं आपका सांसद होने के साथ साथ देश का स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ। जब स्वास्थ्य का सवाल हो और विशेषकर कोरोना की वैक्सीन में प्रायोरिटी का, तो मैं साफ कर दूं कि इसके लिए सरकार एक पारदर्शी नीति बना रही है। मैं पहले भी कई बार इसी संडे संवाद में बता चुका हूं कि इसके लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की प्रक्रिया समेत इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। हाँ, मैं आपको यह ज़रूर भरोसा दिलाता हूं कि जिसे इस वैक्सीन की ज़रूरत पहले होगी उसे वैक्सीन पहले मिलेगी, चाहे वो मेरे संसदीय क्षेत्र का हो अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नवीन जोसेफ फ्रॉम गोवा। ही हैज आस्क्ड, सर देयर आर मेनी रिपोर्ट्स इन द प्रेस एंड ऑन टेलीविजन that the virus propensity will increase in the coming months after the onset of cold weather. Is there any evidence to prove this? Is it true? I shudder to think what will happen. You see, SARS-CoV-2 is a respiratory virus, and the transmission of respiratory viruses is known to increase during the colder weather. Respiratory viruses are known to thrive better in the cold weather and low humidity conditions. There is another fact which needs to be kept in mind. There is an overcrowding in residential dwellings of many people during the winter season. This also increases the transmission of the respiratory viruses. We also have evidence from European countries that with the onset of winters, the number of COVID-19 cases are increasing, as in the case of United Kingdom. In view of these, it would not be wrong to assume that the winter season may see increased rates of transmission of SARS-CoV-2 in the Indian context too. This is the reason why we are emphasizing on diligently following the precautions prescribed by the government. They are so simple. No need to fear and shudder. Please engage with society and your friends circle to spread the message of taking adequate precautions. Every doctor will tell you, prevention is better than cure. Next question is by Rohit Saxena from Delhi. He has said, sir, reinfection is on the rise. You shared in an earlier episode of Samvad that this is not serious. However, after the first case in Bangalore, there have been cases of reinfection in Mumbai, Indore, Goa and Bhopal, and some of these cases are very serious. Please provide an update on COVID-19 reinfection. Rohit ji, I can assure you that even though there are sporadic reports of reinfection surfacing in various states,
Careful analysis of ICMR database reveals that many of these cases have actually been misclassified as reinfections. The clinical diagnosis of SARS-CoV-2 is mainly based on real-time RT-PCR, which also detects dead virus shed for prolonged and varying periods of time. The dead virus is sometimes sequestered in various organs and is intermittently shed for several weeks or even months after recovery. However, such a patient is considered as recovered and non-infectious. Due to the inherent characteristic of the RT-PCR test to detect dead virus, intermittent periods of positivity after a negative test report may be documented. Therefore, any laboratory confirmed case, if tested over a duration of several weeks, may have intermittent positive, negative, and again positive results. Another possibility is that a person during his path of recovery and having a low viral load may have a resurgence of ongoing infection due to immunocompromised state or other secondary infections. Thus, it is very important to differentiate mislabeled reinfection from actual reinfection. Actual reinfection would mean a fully recovered person getting infected by a freshly introduced virus in his or her body belonging to the same or different strain. As I had informed earlier also, ICMR is commissioning a study to understand the true burden of reinfected cases, and the results will be shared in a couple of weeks. अगला प्रश्न है रमेश गुप्ता जी का, जो पूछते हैं, कोरोना वायरस के एक्सपर्ट लंबे वक्त से सर्दी में महामारी के बढ़ने की आशंका जाहिर करते रहे हैं। अब ब्रिटेन और पाकिस्तान ने इसे लेकर अपने नागरिकों को चेतावनी भी जारी कर दी है। क्या सच में सर्दी में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं? देखिए, अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि पर्यावरण में होने वाले किसी बदलाव का असर कोरोना के संक्रमण पर पड़ता है या नहीं। अभी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सर्दी के मौसम में कोरोना का खतरा बढ़ने का सवाल है, तो मैं एक बात साफ कर दूं कि सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी ज़रूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय निस्तुला हैबर जी, who is a political editor at The Hindu. She has said, with a quick turnaround on results and good accuracy, how does Feluda compare to the RT-PCR in terms of accuracy? And if it is favorable, then how soon can we see these quick tests being put to use? Nistula ji, the Feluda paper strip test for SARS-CoV-2 diagnosis has been developed by one of our premier institutions of CSIR, that is IGIB, and has been approved by the Drug Controller General of India for a commercial launch. The kit has already been validated by the Department of Atomic Energy's National Center for Biological Science
Bangalore. Feluda was used in testing samples of over 2,000 patients during the trials at the Institute of Genomics and Integrative Biology. It was tested in private labs too. According to the test results, Feluda showed 96% sensitivity and 98% specificity. For comparison, the current acceptance criteria for RT-PCR kit as set by ICMR is at least 95% sensitivity and at least 99% specificity. So you can see that the lab results show that Feluda indeed provides one of the most accurate results, detecting almost everyone with the deadly disease and ruling out people without the COVID-19 infection. While I can't put an exact date on the availability, we should expect this test within the next few weeks. अगला प्रश्न है प्रियाल जी का, जो पूछती हैं, मेडिकल उपकरणों के मामले में भारत की विदेशों पर कितनी निर्भरता है? क्या कोरोना संकट से सबक लेते हुए सरकार ने इस दिशा में कुछ सोचा है? देखिए, आपदा को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, यह भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। 9 महीने पहले जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी, तो देश में ना तो वेंटिलेटर बनते थे और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप पीपीई किट्स। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी संस्थानों ने भी गजब का जज्बा दिखाया। उन्हें वेंटिलेटर्स और पीपीई के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सभी स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल गाइडेंस उपलब्ध कराए गए और आज देश में इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इतना ही नहीं, आईसीएमआर की कोशिशों का नतीजा है कि आज देश में सभी टेस्टिंग किट्स भी तैयार हो रही हैं। अगला प्रश्न है गौरव गुप्ता जी का, जो पूछते हैं, माननीय मंत्री जी, सुना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक विशेष विमान खरीदने जा रहा है। क्या यह सच है? इस विशेष विमान से क्या लाभ होंगे? देखिए सुमित जी, देश में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम लगातार हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आधुनिक उपकरणों से लैस विशेष रिसर्च विमान खरीदने की योजना बना चुका है। वैज्ञानिक उपकरणों से लैस इस विमान प्रणाली की कीमत 250 करोड़ रुपए हो सकती है। रही बात इस विमान के उपयोग की, तो देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम, वातावरण में विभिन्न वायुमंडलीय अनुसंधान समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग किया जाएगा। मौसम संबंधी क्लाउड भौतिकी डाटा में भी यह मदद करेगा। इसके अलावा यह वायु प्रदूषण मूल्यांकन और भारत में स्वास्थ्य, दृश्यता, जलवायु पर्यावरण और जल विज्ञान संबंधी अध्ययनों के समाधान में भी मददगार हो सकता है। इस पूरी योजना के नोडल एजेंसी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे काम करेगा, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस संस्था है। इस नोडल एजेंसी के जरिए जनता को मौसम के बारे में बेहतर जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रोहन त्यागी फ्रॉम पटना, बिहार। ही हैज सेड, एज पर MOHFW India, COVID-19 cases under home isolation will stand discharged after 10 days of symptom onset and no fever for 3 days. However, asymptomatic cases do not show symptoms. So what is the procedure for home isolation and discharge for them? Rohan ji, since the government of India has adopted the policy of testing the high risk contacts
once between the 5th and the 10th day after exposure to a confirmed case of COVID-19, it is likely that many of these confirmed cases detected during such testing will be pre-symptomatic. That is, these may develop symptoms at a later date or are asymptomatic. That is, these cases may never develop any symptoms. For those who remain asymptomatic, the date of testing positive shall be considered as the first day, and 10-day period, which is also prescribed for symptomatic cases, should be counted from that date only. Next question is by Payal Gupta from Lucknow. She has said, government has given thousands of crores to states and UTs to battle this pandemic. Which states have spent the highest amount and which states have performed poorly? In the first phase, the Government of India has released 3,000 crores to all states and UT administrations. Almost all, but 3 states and UTs have utilized the grant given to them to battle COVID-19 pandemic. Maharashtra has utilized only 42.5% of the grant, followed by Chandigarh at 47.8% and Delhi at 75.4%. Next question is by Shivani Soni from Noida, Uttar Pradesh. She has said, COVID-19 pandemic is far from over, and as of now, globally 1 in 3 doctors who have died due to COVID-19 is from India. What are you planning so that things improve for these corona warriors in the upcoming months? Right from the beginning, we have been very concerned about our frontline healthcare workers. It is a great personal trauma for me that we have lost so many healthcare workers, including doctors. Our government has tried to do everything possible to ensure that our healthcare workers do not contract this dreadful disease. My ministry has taken a series of steps to prevent occurrences of COVID-19 infection among healthcare workers. First of all, states have been thoroughly supported in terms of PPE kits, N95 masks, and hydroxychloroquine tablets for the protection and prophylaxis of healthcare workers managing COVID cases. In addition, AIIMS New Delhi is regularly conducting a series of webinars with the state-level centers of excellence, wherein guidelines on infection prevention and control are being further disseminated. Further, training modules have been made available on the Ministry of Health and Family Welfare website as well as I Got Diksha platform on infection prevention and control practices. The Ministry of Health has also issued guidelines on rational use of personal protection equipment for healthcare workers working in COVID and non-COVID areas of health facilities and in the field. I keep talking personally to all state health ministers and other health officials to ensure that our corona warriors are well taken care of. Next question is by Sakshi Jain from Sonipat, Haryana. She has said, Sir, there are rumors that the government will prioritize young and working class for vaccination and ignore the elderly so that the young people can start working and start contributing to the economy right away. Is this true? Is the government really this desperate for economic revival? Sakshi ji, I would like to categorically state that these rumors are not true. Prioritization of groups to be vaccinated shall be based on 2 key considerations. First is occupational hazard and the risk of exposure to infection.
Second is the risk of developing severe disease and increased mortality. I want to request everyone who is listening to this Sunday Samvad that you all should be very careful about fake news in social media. COVID-19 Fact Check Unit in the Press Information Bureau under the Ministry of Information and Broadcasting is regularly scanning social media platforms for circulated fake news. I want to request you to play your part and report such fake news to this fact check unit. Next question is by Samrat Jain from Jaipur, Rajasthan. He has asked, Sir, which of the vaccines under trial are one shot and which ones require a booster shot? COVID-19 vaccines currently in trial in India are 2-dose and 3-dose vaccines. Vaccine by Serum Institute of India and Bharat Biotech require 2 doses, while the Cadila Healthcare vaccine requires 3 doses. For other vaccines in preclinical stages, the dosing is being tested. Dev from Chandigarh has asked, Johnson & Johnson vaccine is a single shot vaccine that has reached phase 3 clinical trial. Will you be open to including this to the list of vaccines under trial in India? Dev ji, considering the large population size of India, one vaccine or vaccine manufacturer will not be able to fulfill the requirements of vaccinating the whole country. Therefore, we are open to assessing the feasibility of introducing several COVID-19 vaccines in the country as per their availability for the Indian population. Next question is by Ajay Kaduskar from Nagpur, Maharashtra. He has asked, Russia and China already have emergency use authorization. Why are we not considering this in India? Ajay ji, presently COVID-19 vaccines are in the various stages of phase 1, 2 or 3 or bridging 2 or 3 clinical trial data generation, the results of which are awaited. Adequate safety and efficacy data is required for emergency use authorization, vaccine approval, for ensuring patient safety. Further course of action will depend on the data generated. Varsha Bhanushali ji from Mumbai has asked, Sir, what is the point of going into phase 3 trials when several vaccines have already been proven in phase 1 and phase 2? Varsha ji, the purpose of conducting phase 3 clinical trials is different from phase 1 and phase 2 trials. Endpoint measurements for each phase of clinical trial differ a lot. Phase 1 trials are done primarily to establish the safety of the product. Immunogenicity or capacity of a vaccine to generate protective antibodies after vaccination is usually a secondary endpoint. In this phase, the volunteers involved are less than 100. After interim follow-up and safety report of participants for 28 days, phase 2 trials can be initiated in parallel. Phase 2 trials measure immunogenicity as a primary endpoint and safety as a secondary endpoint. The number of volunteers for this trial can be less than 1,000 in this phase. After an interim follow-up of participants for 28 days and documentation of some immunogenicity, phase 3 trials can be initiated in parallel. In phase 3, while both safety and immunogenicity continue to be measured as secondary endpoints, efficacy, that is, the effect of a vaccine in reducing
clinical disease is the primary endpoint. Other concerns related to the vaccines, like the capture of relatively rare adverse events, unique responses related to host dynamics, and duration of persistence of antibodies or protection against the disease can also be captured. Numbers are generally in several thousands, sometimes even close to 30,000 to 40,000 participants. Phase 3 trials take time due to the following reasons. Measuring clinical efficacy of the vaccine is time consuming, as one has to wait for 1 to 2 seasons for the disease to appear and actually measure the reduction. For documenting the duration of protection, one needs a long-term follow-up. Each phase of the clinical trial is important to ensure foolproof development process and provision of a safe and effective vaccine to people. And now a last question from Ms. Gitanjali from New Delhi. Sir, India has been lauded by the world for taking proactive action and being able to avoid too many deaths so far. You are at the center stage of managing this crisis. As the country's health minister who is responsible for the good, bad, and the ugly, what is your message to the nation? Gitanjali ji, without sounding complacent and without condoning the deaths of our brave corona warriors, I can say that so far we have a much lower mortality rate as compared to other countries. We are working to ensure that we are able to mitigate this virus. Given all constraints, I would think India handled this very maturely with speed, scale, and determination. The world is appreciating the determination of our medical personnel and everyone who was involved in the disease management. I want to thank the entire team of frontline health workers who are performing their duty to the nation in an exemplary way and who have shown utmost commitment. I must tell you that India has taken a thought leadership role led by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I have always maintained that India is a spiritual nation, and when India decides, it can do anything. Political ownership of stringent decisions is the need of the hour, and our Prime Minister has taken an unequivocal lead in this. My message to the nation is very clear. We all need to be responsible citizens if we have to win the battle against novel coronavirus. This responsible behavior is not limited to the real world, but also extends to the social and the digital world. My humble request to you is not to share any content related to health and safety without checking the veracity of the content. If possible, only share a direct link from credible sources so that the content cannot be tampered with. Over the next few months, as we learn more about the novel coronavirus and more vaccine candidates start their phase 2 and phase 3 trials, there is bound to be a lot of fake and incorrect news on social media platforms. This is being spread by vested interests. I would like each and every one of you to behave responsibly. With this, my dear friends, we complete the 5th edition of Sunday Samvad. I must thank you all once again for continuing this wonderful two-way communication with me. Have a great week ahead and see you soon in the next episode of Sunday Samvad.